गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। आप सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। 7:26 हुए हैं और आज 4 मिनट पहले ये संध्याकालीन सत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं। समिंदर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। और कल तकनीकी बाधा के कारण क्लास संभव नहीं हो पाया था, तो आइए चलें आज हम इसको अंजाम दें और क्लास की शुरुआत करें। द टर्म -5 + 10 फॉर्मूला। अब आप सोचते होंगे कि ये कोई मैथमेटिक्स है। डियर एस्पिरेंट्स, द टर्म -5 + 10 फॉर्मूला, this was seen in the discussion on Indian agriculture. So what does it refer to? अब इसका संबंध किस पर है, प्रसंग किससे है? A, reducing fertilizer use by 5% while increasing crop yield by 10%. एक बार फिर से सुनेंगे, -5 + 10। ये फॉर्मूला है इंडियन एग्रीकल्चर में और बताना है आपको कि ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है। बी, रिड्यूसिंग राइस कल्टीवेशन एरिया by 5 million hectares while increasing its production by 10 million tons. C, reducing MSP, minimum support price, by 5% while increasing procurement by 10%. D, reducing irrigation usage by 5% while increasing cropping intensity by 10%. So, dear aspirants, these are the 4 options A, B, C, D, and now you have to find out which is correct. Mr. Saminder Singh is answering D, but I am not sure. Yes, so B is the answer. B for boy. B is the answer. Reducing rice cultivation area, चावल की खेती का क्षेत्र घटाना 5 million hectares while increasing its production by 10 million tons. तो एक तो उनका एरिया घटाना है कितना, 5 million hectares, डियर एस्पिरेंट्स, और दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाना 10 million tons. So this is -5 + 10 formula. So it relates to rice. ये चावल से संबंधित है डियर एस्पिरेंट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम सुनेंगे, क्या सुनेंगे? द टर्म -5 + 10 formula sometimes seen in the news, okay, and discussions on Indian agriculture refers to. So the answer is reducing rice cultivation area by 5 million hectares while increasing its production by 10 million tons. So dear aspirants, अब इस प्रश्न को आपने भली भांति समझ लिया होगा और यहीं से आज की हम शुरुआत करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नांकित कथनों पर विचार करें रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इन इंडिया। जो केंद्रीय प्राधिकार है भारत में, उनका जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन? क्षेत्राधिकार। ओके, वी हैव 3 स्टेटमेंट्स। नंबर 1, व्हाइल द सीबीआई रिक्वायर्स general consent from state governments to operate in their territory, the NIA enjoys automatic jurisdiction for scheduled offenses. Statement 2, the NIA is a statutory body, whereas the Central Bureau of Investigation was established via an executive resolution. Third statement,
both NIA and CBI function under the administrative control of the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. So which of the statement given above is are correct? A1 only, B1 2, C2 3 and D1 2 3. So dear aspirants, this MCQ relates to CBI as well as NIA. So the jurisdiction of the central agencies in our country. So what should be the answer to this MCQ? Statement 1 and 2 are correct. CBI requires general consent from state governments to operate in their territory. NIA enjoys automatic jurisdiction. So Sakshi, very good evening. And today for the first time I had brought one question from agriculture sector. So आप वीडियो को रिवाइंड करके निश्चित रूप से सुनिएगा. So both NIA and CBI function under the administrative control of Ministry of Personnel. This statement is not correct. Dear aspirants, NIA is under the Ministry of Home Affairs. Okay, while Central Bureau of Investigation functions under administrative control of Department of Personnel and Training, which is part of Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension, Government of India. I hope it is clear to you. और काफी अच्छे से NIA के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे. NIA was created by NIA Act 2008. CBI was established in 1963 via an executive resolution of the Ministry of Home Affairs. Dear aspirants, while it was set up by an executive order, which often leads to non-statutory level in casual reading, it derives all its investigative legal powers from Delhi Special Police Establishment Act 1946. So, first two statements are correct. अब एक क्वेश्चन लेते हैं डियर एस्पिरेंट्स पॉलिटी से. विथ रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर, जो क्षमादान की शक्ति है किसके पास? ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, while the Indian president is constitutionally bound to act on the advice of Council of Ministers, the US president exercises the pardoning power as an independent personal discretion. Second, in the USA, the president's power extends to both federal and state criminal offenses, whereas in India, it is restricted to union laws. The third statement, the US president can grant a pardon for contempt of court, whereas the Indian president cannot. Which of the above statement are correct? A1 only, B1 3, C2 3 and D1 2 3. So dear aspirants, the first statement is correct because in India, the president is a constitutional head who must act according to the aid and advice of Council of Ministers, Article 74. The Supreme Court confirmed in Maru Ram versus Union of India that the power under Article 72 is actually the power of the central government. In contrast, the US president exercises this as a personal prerogative without needing approval from the cabinet or Congress. Statement 2 is not correct because in USA, the president's power is strictly limited to federal offenses. Statement 3 is correct. The US Supreme Court ruled that the president can pardon criminal contempt court. In India, the power under Article 72 does not extend to contempt of court.
So, dear aspirants, our answer should be B 1 and 3. Our answer should be B 1 and 3. Let us move to the next question. आगे के प्रश्नों पर हम चलते हैं और यहां पर एक प्रश्न है with reference to the electoral process in India. Consider the following statements. Number one, the BLO, block level officer, BLO is a statutory officer appointed under the provisions of the Representation of the People Act 1951. Second statement, the BLO is responsible for the custody of electronic voting machine after the polling process is completed. The booth level officer is appointed by the district election officer, DEO. How many of the statements given above are correct? A only one, B only two, C all three, and D none. Dear aspirants, our answer should be A. One statement is correct. Booth level officer, BLO, is not a statutory officer defined under Representation of People's Act 1951. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारत में जितने प्रकार के चुनाव होते हैं वो त्रिपिटक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, डियर एस्पिरेंट्स, 1951. उसे हम हिंदी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं. तो अब बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ, नॉट ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर की बात हो रही है. ये स्टैट्यूटरी ऑफिसर डिफाइंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में नहीं है. इट कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इस प्रकार से आपने देखा. अब BLO is responsible for the custody of EVM after the polling process is completed. So dear aspirants, आइए चले एक और प्रश्न ले लेते हैं. India has recently entered into a new trilateral technology and innovation partnership aimed to strengthen cooperation on critical and emerging technologies. The other two countries are A. France and South Korea, B. Canada and Australia, C. France and Australia, and D. Finland and Netherlands. अब ये पिछले महीने में आपने देखा, नॉट इन मार्च, फरवरी टू मार्च, लगातार जो विश्व स्तर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत का दौरा हुआ और उनके साथ डील हुए, एग्रीमेंट्स हुए. इंडिया हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए न्यू ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप एम्ड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अब वो दो देश और कौन है? एक तो इंडिया है. आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? ए. फ्रांस एंड साउथ कोरिया, B. Canada and Australia, C. France and Australia, and D. Finland and Netherlands. तो देखते हैं आपका उत्तर आता है कि नहीं. So yes, if you are not answering, B is the answer. Canada and Australia. India, Australia, Canada have announced a new trilateral framework, the Australia-Canada-India Technology and Innovation ACITI partnership to enhance cooperation in critical and emerging technologies. So the answer is B, Canada and India.
आइए चले। कल तकनीकी बाधा के कारण 2-3 बार रिफ्रेश होने के बावजूद भी क्लास नहीं हो पाया, तो आज हमने 4 मिनट 5 मिनट पहले क्लास शुरू कर दिया। With reference to the enactment and original structure of Constitution of India, बीकी सिंह जी आ गए, वेरी गुड इवनिंग। और कल काफी बाधा हुई, आप लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ा, तो ये तकनीकी कारणों से था। तो फिर आज सब कुछ ठीक है, इट हैपेंस समटाइम्स। अब ये अचानक से आंधी तूफान इंटरनेट के जो वायर है उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, और तब न तो स्पीड होता है और न तो स्ट्रीमिंग होती है। डियर एस्पिरेंट्स, with reference to the enactment and original structure of the Constitution of India, consider the following statements. निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला, the original Constitution comprised 395 articles, 22 parts and 12 schedules. सही है? ओके, सही है क्या? सर आपने लाइफ में क्या क्या किया है? मैंने लाइफ में आईएएस रिटायर्ड हुए हैं यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और विभिन्न पदों पे मैंने काम किया। स्पेशल सेक्रेटरी से रिटायर हुआ और फिर आपके सामने हूं। तो नॉन स्टडी, साची नॉन स्टडी, तो लाइफ में क्या क्या किया, तो और जो सबके साथ होता है वो हुआ। बचपन में पढ़ाई हुई, उसके बाद जॉब हुआ, उसके बाद काफी लगन से 36 इयर्स की सेवा किया, रिटायर्ड होके घर आए, और अभी आप लोगों को भी वहां तक पहुंचाने की इच्छा है, ड्रीम है कि जिस चैट बॉक्स में आप आंसर लिख रहे हैं या आपने हमसे सवाल किया, उसी चैट बॉक्स में आप लिखें, सर आई हैव बीन सेलेक्टेड। ये कितनी खुशी होगी, और यही मेरी सबसे बड़ी पिपासा है। डियर एस्पिरेंट्स, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, इट्स करेक्ट, बट नॉट 12 शेड्यूल्स। The total number of schedules were only 8. 4 have been added. So the first statement is not correct. Second, while the Constitution was adopted on November 26, 1949, it did not originally contain, a preamble which was added later by 42nd Amendment Act. This is also not correct. Third statement, the preamble was the last part of Constitution to be voted upon and adopted by Constituent Assembly, dear aspirants, to ensure its conformity with the enacted. परशुराम आ गए, so good evening, very good evening Mr. परशुराम जी, provisions, और इस प्रकार से third statement is correct. The Constitution originally provided for provisional parliament to function until the constitution of the first elected parliament, but such provisions no longer exist. This statement is also correct. So, dear aspirants, A12, B34, C134, and D31D. So, our answer should be, okay, is it clear to you? B for boy. 3 and 4. So the first statement is not correct because सर आप कौन से बैच के आईएएस हो, ये सब क्या पूछ रहे हैं आप? ओके डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से आइए, यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन सुनिए। विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल आरएनए, हियर कम्स ए क्वेश्चन रिलेटेड टू science and tech, dear aspirants. With reference to single cell RNA sequencing, scRNA seq, consider the following statements. Number 1, it measures gene expression at the level of individual cells rather than averaging
across a population of cells. Second, it enables identification of rare cell types and cellular heterogeneity within the tissue. Dear aspirants, और इसके बाद क्या ये सवाल करते हैं, सर सही बताएं आप सच में आईएएस थे? अरे हाँ यार, कैसे बोलूं? आई एम एस के तिवारी, आईएएस रिटायर्ड, एंड दिस इज सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर झारखंड, जहां से आपका ये चल रहा है। ओके, और पढ़ाई की बात करें, ठीक है, क्योंकि 24 मई को प्रीलिम्स है, उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अनलाइक बल्क आरएनए सीक्वेंसिंग, एससीआरएनए uses unique molecular barcodes to distinguish transcript from different cells. How many of the above statements are correct? So dear aspirants, सारे के सारे ओके स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो सर आपके अभी तक कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं? अभी तक 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, और इस साल तो काफी होंगे। समिंदर सिंह जी हैं, हमारे इसी क्लास में मौजूद हैं, परशुराम कुमार जी हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, और मेरा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हालांकि यहां मैं लिमिटेड एस्पिरेंट्स को ही मेंटरिंग कर पाता। सो कोचिंग और मेंटरिंग पे ज्यादा ध्यान है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। डियर एस्पिरेंट्स, उसकी तैयारी और वास्तविक तैयारी, सबसे बड़ी बात है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है दिल्ली के चकाचौंध में जाने का, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में कोचिंग लेने का, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग, कोई यहां पे राशि की बात नहीं है, बस केवल मार्गदर्शन है। सो डियर एस्पिरेंट्स, और कैसे तैयारी की थी? देखिए, अभी का जो सिलेबस है वो 2011 का सिलेबस है, हमारे समय का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक इनटू अकाउंट द सिलेबस एज वेल एज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जिस तरह का डिमांड है सिलेबस का, और जिस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पैटर्न की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो बस उसी तरह से तैयारी कीजिए। और आईएएस की जो तैयारी होती है वो स्वयं से होती है, और इसीलिए मैं बार बार करता हूं, अब जिनके पास पैसे हैं, ऊंची ऊंची राशि है, वो तो कोचिंग में चले जाएंगे, लेकिन क्या किसी गरीब को, असमर्थ को, जिनके माता पिता के पास लाखों रुपए नहीं है, क्या उन्हें आईएएस नहीं है? और ये उन्हीं के लिए प्रयास है। डियर एस्पिरेंट्स, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं आफ्टर रिटायरमेंट, 2 वर्षों से लगातार एवरी डे, इवन ऑन संडे, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं 7:30 से लगभग 8:15, 8:30 तक लाइव क्लास का। तो यही उद्देश्य है। आइए चले, समय न गवाएं और अध्ययन करें। डियर एस्पिरेंट्स, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग पर यह सवाल हमने आपको बताया। अब एक विक्की सिंह ने कहा है स्कीम के लिए, तो आज मैं कई स्कीम्स आपको बताऊंगा। पिछले दिनों भी मैंने कई स्कीम के बारे में आपको बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स। जब आप PYQ देखेंगे, यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM Shri schools. Number 1, it is a central sector scheme. Now there are 2 types of schemes, central sector and central sponsored. Okay, are you getting it? If you have got pen and paper, please note it down. So central sector scheme aimed at
developing one school in each district across the country. One school in each district across the country. Second statement, under the PM Shri SHRI, having a valid unified district information system for education, code is a mandatory prerequisite for any school to be considered for election, to be considered for selection. Third, geo-tagging of PM Shri schools for monitoring will be carried out with technical support from Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformatics, BISAG-N. Which of the above statements are correct? A12, B3 only, C23, and D123. So, dear aspirants, the first statement is incorrect and second and third statements are correct. So, for the selection under the PM Shri scheme, only the elementary schools, that is 1 to 5, and the secondary, that is 1 to 10, managed by center, state, UT governments, local self-governments, okay, would be considered. So, yes, Vicky Singh ji, 2 and 3, that is C, correct answer. So, this is thumbs up for your correct answer. आइए चले, with reference to the Sevilla Forum on Debt, DEBT, Udhari, Sevilla, SEVILLA, consider the following statements. निम्नांकित कथनों पर विचार करें. Number 1, it is a platform launched under the aegis of the World Trade Organization, that is WTO. Second, the forum addresses the global sovereign debt crisis, specifically targeting the challenges faced by developing nations. And the third statement, India officially opposed this Sevilla Forum on Debt. So, which of these statements are correct? Dear aspirants, it is not led by WTO, so first statement is not correct. The Sevilla Forum on Debt is led by Spain, okay? A new dialogue hub on debt, bringing together all stakeholders, creditors, borrowers, international financial institutions, and academia on debt, sustainability, management, and innovative solutions. Dear aspirants, India strongly supports the principles and objectives of Sevilla Forum on Debt. So our answer should be C2 only. Only the second statement is correct. So dear aspirants, इस प्रकार से मेरा पूरा विश्वास है कि आपने प्रश्नों पे कमांड कर लिया. With reference to the International Union for Conservation of Nature, this is IUCN. I think that we should not ask Pandit's caste, we should gain knowledge from Pandit. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब तरह तरह की बात पूछते हैं जो रेलेवेंट नहीं है. आपका बैच कौन है, आपका नाम क्या है, आपने किससे शादी किया, आप अविवाहित हैं, ये सब से क्वेश्चन तो नहीं आएगा. डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन तो वही आएगा जो मैं चर्चा कर रहा हूं. तो कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, ओके, एंड वी शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यदि इसी की जरूरत है तो माय व्हाट्सएप नंबर इज 9934739191. उस पर आप कॉल कीजिए, खूब जम के बातचीत कीजिए, ओके. लेकिन यहां केवल पढ़ाई कीजिए. विथ रेफरेंस टू, आपका समय कितना कीमती है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, consider the following statements.
COP33 के बारे में जो इंडिया ने डिसीजन लिया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, नंबर 1, a road map was unveiled for a national level red list system in India to assess extinction risk of around 11,000 species. Second statement, India's first dugong conservation reserve in Pak Bay, Pak की खाड़ी, was recognized as a global model for marine biodiversity conservation. Third, Vivek Menon was appointed as the chair of Species Survival Commission, SSC, becoming the first Asian to hold the post. कितना इंपॉर्टेंट है। सोनाली घोष received the WCPA Kenton Miller Award for innovation in national park. So how many of the above statements are correct? अब ये बिल्कुल recent है, all the 4 statements are correct. ये सारे के सारे statement इसमें सही है। So dear aspirants, इस तरह से आपने सवालों पर पकड़ बना। तो आइए चलें कुछ और प्रश्न ले लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हम आपको जानकारी देंगे जो आपकी जानकारी में ये प्रश्न है या नहीं। In India's 3-stage nuclear power program, 3 stage, what role does faster breeder technology play? Faster breeder technology play. A. This is ABCD type of question. You will have to answer. You will have to pick up only one option. A. It replaces the need for pressurized heavy water reactors, PHWR. PHWR, pressurized heavy water reactors. B, it serves as a bridge between PHWRs and future thorium-based systems. Thorium. C, it is the final stage using only thorium-232. D, it exclusively generates weapons grade plutonium. Dear friends, what should be the answer to this question? If you are knowing, you should answer this question. यदि आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन पे निश्चित रूप से जवाब देंगे। In India's 3-stage nuclear power program, Mr. Alam is telling it is the final stage using only thorium-232. So, okay, B, Vicky Singh is telling B, it serves as a bridge between PHWR and future thorium-based system. So, okay, now let us wait for others to answer. कुछ और लोगों के आंसर हम देख लेते हैं। Dear aspirants, so what do we mean by thorium-232? Thorium-232 is a naturally occurring weakly radioactive metal and the most abundant isotope of thorium with a 14 billion year half-life. It is a fertile material that transmutes, okay, fissile uranium-233 for nuclear energy with roughly 4 times more, okay, dear aspirants, crustal abundance than uranium. Okay, thorium-232 directly fissile but is fertile. It absorbs a neutron and converts
233 uranium, a highly efficient fuel for thermal spectrum reactors. Okay, so C is the correct answer. Coast of Kerala, Tamil Nadu, etc. Yes, wonderful. So Mr. Alam is correct. Mr. Alam is correct. अब आइए चले और ऐसे प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। और यहां पर एक प्रश्न है लेक्स, ज्योग्राफी से सवाल। MAINDOMBE, माई डोम्बे, एंड टुम्बा, TUMBA, recently seen in the news for releasing ancient carbon, are located in which of the following? Okay, A, Amazon basin, B, Congo basin, C, Nile basin, and D, Mississippi basin. So dear aspirants, अब आपको बताना है कि ये टुम्बा कहां पे है। ओके, सो वेयर डज इट एग्जिस्ट? और चैतन्य जगदप ने कहा कोंगो बेसिन। सो इस प्रकार से कोंगो बेसिन में ये है। ओके, सो कोंगो बेसिन में है। और डियर एस्पिरेंट्स, कोंगो बेसिन, मोहम्मद आलम, बीकी जी, योर आंसर इज ऑल्सो सेम। अब समिंदर जी का आंसर क्या है ये बताएं। ओके, सो द आंसर इज करेक्ट। दिस इज थम्स अप फॉर योर करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, कोंगो बेसिन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। पंच ज्योति, JYOTI, पंच ज्योति फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे जुड़ी हुई बात है? पंच ज्योति, ए, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशन, डियर एस्पिरेंट्स, बी, नेशनल सोलर मिशन। अब ये आपको बताना है कि ये किससे जुड़ा है, पंच ज्योति। सो डियर एस्पिरेंट्स, सी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, एंड डी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब आपको बताना है कि ये किससे जुड़ी हुई बात है। ए इज द करेक्ट आंसर। पंच ज्योति रिलेट्स टू नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। वीकी सिंह जी, सी नहीं है। ओके, बायोफ्यूल पॉलिसी नहीं है। दिस इज, एक बार ध्यान से सुनिएगा, पंच ज्योति 5 लाइट फ्रेमवर्क, ए इज द करेक्ट आंसर, is the Reserve Bank of India's, RBI's, national strategy for financial inclusion. Okay, financial inclusion, dear aspirants, or 2025 to 2030, designed to move beyond basic account access toward meaningful, sustainable financial usage. It focuses on 5 key pillars. अब जान बुझ करके मैं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस पर भी वो सवाल कर दें। ओके, इट फोकसेज ऑन 5 key pillars: universal access to services, gender sensitive inclusion, livelihood links, financial education and consumer protection. Dear aspirants, इस प्रकार से आपने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आई मीन टू से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पंच ज्योति का? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मूव फ्रॉम सिंपली हैविंग एन अकाउंट
to actively using digital payments and credit facilities. अब पीएम जनधन योजना में अकाउंट तो खुल गया, लेकिन बहुत सारे अकाउंट डोरमेंट हो गए, बहुत सारे अकाउंट डोरमेंट हो गए। अब क्या है, कहीं पे यूके बैंक का पेटीएम है, हरिद्वार जाइए तो वहां पे कोई और बैंक का एटीएम है, और कहीं जाइए तो और बैंक का एटीएम है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति ने 5-5, 6-6, 10-10 एटीएम लिए खाता खोल के, लेकिन यूपीआई चल नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? ओके, अब बहुत सारे डोरमेंट हो गए अकाउंट, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो शर्मिंदर सिंह जी और मिस्टर चैतन्य जगतप जी और मिस्टर आलम, योर आंसर करेक्ट। तो आइए चले इस तरह से प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। और एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मॉन्टेगू-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. Is it correct? Second statement, the Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So this was the question in prelims 2021. 2021 के प्रीलिम्स में D is the correct answer. Wonderful. Both are incorrect. तो इस तरह से आप, अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशलिस्ट सोसाइटी, ओके, समाजवादी समाज का आर्थिक संरचना इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी क्या विशेषता है? ए, unregulated market competition to determine the price of essential goods. A. B. Centralized planning that prioritizes the needs of whole society. C. A decentralized system where each village produces only for its own consumption. D. The total absence of any industrial production or manufacturing. So socialist society का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पे ये 4 कथन। Dear aspirants, if you have heard it properly, you will be able to answer. If you have not, B is the correct answer. Wonderful. Centralized planning that prioritizes the needs of the whole society. Yes, Mr. Chaitanya, you have well read और बहुत अच्छे तरह से आपने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर, नंबर 1, the president can exercise veto powers with regard to constitutional amendment bills. Is it correct? Second, the president cannot exercise veto powers over state legislatures. Which of the statements given above are not correct? Okay, A1 only, B2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. President's veto power. Okay, the president can exercise veto power with regard to constitutional amendment bills. Is it correct? Okay, C is the answer, not B. The president cannot exercise veto powers over state legislatures, and no, Vicky Singh is telling C, both 1 and 2. Yes, correct, very good. और
Sushant Shekhar is answering D. So not correct. Not correct means, are you okay of the opinion that both the statements are correct? Okay. Can exercise veto on Constitutional Amendment Act? Okay. क्या आप agreed हैं? Dear aspirants? No, both are yes. Very good, very good. So, dear aspirants, veto power of president. Okay, this is very important. Veto power of the president, particularly under Article 111 of the Indian Constitution, enables the executive to withhold assent to bills passed by parliament, acting as a check on legislative power. The president has three main type of veto. कौन कौन वीटो है प्रेसिडेंट को? एब्सोल्यूट वीटो पहला, दूसरा सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा पॉकेट वीटो. ओके, तीन वीटो है. दो, दे कैन नॉट वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड. एब्सोल्यूट वीटो, the president refuses to sign a bill, preventing it from becoming law. This is typically used for private member bills, or if the cabinet resigns after a bill is passed but before assent. Suspensive veto, the president returns a bill to parliament for reconsideration. Pocket veto, the president takes no action on the bill for an indefinite period. Understood? I hope I am clear to you, dear aspirants. So, इस प्रकार से प्रश्नों पर जब आप अध्ययन करते हैं, ओके, तो आपकी तैयारी में चार चांद लगता है, डियर एस्पिरेंट्स. और यही तो है चैनल जहां पे हम प्रश्नों को लाते हैं, चुन चुन करके लाते हैं. डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1 2 3 स्टेटमेंट्स. द निजामत ऑफ आर कोर्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट. Nijamat of Arcot. Second, the Mysore kingdom emerged out of Vijayanagar empire. Or third, Rohilkhand kingdom was formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani. Select the correct answer using the code given below: A12, B2 only, C23 and D3 only. Dear aspirants, Nijamat of Arcot, Mysore kingdom, okay, 2 only, and Rohilkhand kingdom, Ahmad Shah Durrani. Wonderful, great. अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं. With reference to 8 August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? A, the Quit India resolution was adopted by AICC. B, the Viceroy Executive Council was expanded to include more Indians. Yes. C, the Congress ministers resigned in 7 provinces. And D, Cripps proposed an Indian union with full dominion status once the Second World War was over. Now we have to find out what happened on 8th August 1942. So Chaitanya is answering A. Okay.
डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको बताना है कि व्हाट हैपेंड ऑन 8 अगस्त 1942। डियर एस्पिरेंट्स, और परशुराम जी ने डी आंसर दिया। ऑन अगस्त 8, 1942, the All India Congress Committee passed the historic Quit India resolution. Dear aspirants, don't forget. Okay, so A is the correct answer. The Quit India resolution was adopted by AICC. So, dear aspirants, AICC approved the resolution for immediate independence and mass civil disobedience. Dear aspirants, our father of the nation, Mahatma Gandhi, started with Champaran, okay, then non-cooperation, then civil disobedience, and ultimately Quit India movement. बिकॉज हम आपसे सहयोग नहीं करेंगे, हम आपसे विनय पूर्वक अवज्ञा कर रहे हैं। फिर अंत में तो जब कुछ भी नहीं हुआ, ओके, तब फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू और डाई, करो या मरो। अब आइए चले, कुछ आपको जानकारी प्रदान करेंगे, सूचनाएं बताएंगे, जिससे आपकी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। डियर एस्पिरेंट्स, जल डमरू मध्य का जहां तक सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट हॉर्मुज, और उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट, बाब अल मंडेब स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट एंड डेनिस स्ट्रेट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जिस पर कि आपकी पकड़ नितांत आवश्यक है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपने पकड़ बना भी लिया होगा। पीएम मुद्रा योजना ये काफी महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द एम ऑफ पीएम मुद्रा, मिस्टर वीकी सिंह? इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एम्ड एट फंडिंग द अनफंडेड। आज मैं ग्रुप में इसको डालूंगा, सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर के ग्रुप में, और मेरा नंबर है 9934739191। आप ये सारे मटेरियल देखेंगे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। डियर एस्पिरेंट्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, ये दोनों प्रकार की योजनाओं पर हम आपकी पकड़ को मजबूत कराने के लिए ये सारी योजनाओं की सूची हम आपको भेजेंगे। व्हाट इज HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट मेजर्स हाउ डेवलप्ड ए कंट्री इज, not just by income but by health, education and standard of living. These are the 3 yardsticks. Okay, HDI measures how developed a country is not just by income but by health, education and standard of living. Dear aspirants, this is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे ऐसे विषयों को चुन करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सो आइए, 45 मिनट का समय व्यतीत हो चुका, मोर देन दैट 50 मिनट्स, और फिर कल आना ही है 7:30 बजे। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम चुन चुन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन जीएस पेपर 1 एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? 50 करेक्ट क्वेश्चंस विदाउट ए सिंगल इनकरेक्ट क्वेश्चन। सो फ्लॉलेसली, ओके, बिना किसी त्रुटि के, त्रुटि विहीन होकर 50 क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे देते हैं, यू आर इन
the safest zone. You are going to crack PT. Dear aspirants, thank you for joining me in such a good number. Let me say good night to all of you. Bye-bye.